जैसा कि आप सभी जानते हैं कि प्रत्येक वर्ष 16 सितंबर को ये इंटरनेशनल डे फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ ओजोन लेयर मनाया जाता है। और उसी श्रृंखला में आज हम ये ओजोन डे मनाने के लिए यहाँ पे एकत्र हुए हैं। आज इस महत्वपूर्ण विषय पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर सुब्रत दास मौजूद हैं। हम आपका हम आपके आभारी हैं सर। डॉक्टर दास एनआईटी पटना में डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री एंड केमिकल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के विभागाध्यक्ष हैं। और he will be discussing with us on chemistry of ozone depletion and Montreal protocol on ozone depleting substances, जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे। तो एक जोरदार तालियों से डॉक्टर दास का अभिवादन और स्वागत। और मैं अनुरोध करना चाहूंगा परिषद के सदस्य सचिव महोदय श्री एस चंद्रशेखर जी से कि वो स्वागत भाषण से हमें लाभान्वित करें। सर। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण परिषद, आज के मुख्य अतिथि डॉक्टर सुब्रता दास, हेड डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री एंड केमिकल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, एनआईटी पटना, परिषद के सभी पदाधिकारी हैं और ऑनलाइन से जुड़े प्रतिभागी हैं, आप सभी का बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण परिषद की ओर से मैं आज 16 सितंबर इंटरनेशनल डे फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ ओजोन लेयर के दिन के अवसर पर आयोजित इस लेक्चर कम इंटरेक्शन में आप सभी को मैं आमंत्रित करता हूं। हम सब अवगत है कि जैसे जैसे आबादी बढ़ते हैं उसके अनुसार वो हम लोगों का डिफरेंट इक्विपमेंट्स या मशीनरीज या कोई कुछ हम लोगों का कूलिंग के लिए बहुत कुछ मशीन्स की जरूरत पड़ती है और उसका असर ओजोन लेयर पर पड़ता है। ये सिर्फ ना केवल ये ओजोन लेयर एटमॉस्फेयर के ऊपर का है और इसका ओजोन का अगर जो जनरेशन नीचे ग्राउंड लेवल पर होता है उसका भी जो है असर डिफरेंट तरह का हम लोगों का दैनिक कार्यों में क्रियाकलापों में असर पड़ता है, जो पोल्यूटेंट के रूप में भी पहचाना जाता है। इसमें इसको लेकर भारत सरकार द्वारा विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय समझौता में पार्टी है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल और तरह तरह का और इंटरनेशनल कन्वेंशंस का इंडिया एक पार्टी है। उसके कड़ी में भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा भी जो है इसका एक अलग सेल क्रिएट किया हुआ है, ओजोन सेल, दिल्ली में। उसके उसके उस सेल के माध्यम से कितना ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस का उपयोग हो रहे हैं, उसका असर कितना पड़ रहा है और इस पर इको फ्रेंडली, एनवायरमेंट फ्रेंडली क्या अल्टरनेटिव्स हो सकता है, इस पे शोध भी चल रहा है। उसको बहुत सारे ब्रांड हैं जो उसको अल्टरनेटिव एक एनवायरमेंट फ्रेंडली गैसेस का यूज को भी बढ़ावा देते हैं, जैसे कि आप लोग उसको नोटिस करते होंगे R29 वगैरह का गैसेस का। तो ये आज का ये टॉपिक जैसे कि लाइक एनी अदर डे कमेमोरेटिंग पर्टिकुलर टॉपिक ऑन एनवायरमेंट, आज का ओजोन लेयर पर है। तो इसका भी मुख्य उद्देश्य है कि जो है जन जागरण के लिए और पदाधिकारियों, स्कूल कॉलेज के बच्चों के बीच में जागरूकता को अभिवर्धित करने का एक उद्देश्य से इसको आयोजित किया जा रहा है। आज का इस अवसर पर मैं पुनः आज का हमारे मुख्य अतिथि एवं वक्ता डॉक्टर सुब्रता दास, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री एंड केमिकल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी को पुनः मैं आमंत्रित करता हूं। सर, वेलकम सर। थैंक यू। थैंक यू सर। और I have been asked to discuss with you the significance of today's topic. The topic is very significant. और जैसा कि अभी मेंबर सेक्रेटरी साहब ने बता रहे थे कि किस तरह से हम ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस को फेज आउट कर रहे हैं धीरे धीरे। तो एक्चुअली इसका ध्यान मुझे लगता है 1985 वियना कन्वेंशन के
समय लोगों का ध्यान इसकी ओर आकृष्ट हुआ, और बाद में अ, फिर यूनाइटेड नेशंस के रेजोल्यूशन के अंतर्गत ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आया, जो 87 में ड्राफ्ट हुआ था, और आई बिलीव 1992 में इंडिया ने इसमें साइन किया। तो आप सभी जानते हैं ये मैकेनिज्म, और डॉक्टर दास इस पर डिटेल से चर्चा करेंगे कि स्ट्रेटोस्फेरिक लेयर में जो ओजोन लेयर है वो नेचुरली अकरिंग ओजोन लेयर है। वो हमारे लिए किस तरह से एक प्रोटेक्टिव लेयर का काम करता है। बट ड्यू टू आवर वेरियस एक्टिविटीज, हम अपने जीवन में जो कई सारे इक्विपमेंट्स और फैसिलिटीज सुविधाएं उपयोग करते, उसमें कई सारी चीजें जिन्हें हम ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस के नाम से जानते हैं, ये मोस्टली क्लोरीन एंड ब्रोमीन बेस्ड कंपाउंड्स, और इस तरह से ये ऊपर में जाकर के ये ओजोन लेयर को थिनिंग कर रहा था। तो इस ओर लोगों का ध्यान आकृष्ट हुआ, और उसके बाद ये जब मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आया, मैं हमेशा कहता हूं कि ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, कई सारे प्रोटोकॉल्स हम लोग साइन करते हैं, उसको फॉलो करते हैं नेशनली इंटरनेशनली, लेकिन मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इज एन एक्सेलेंट एग्जांपल ऑफ ग्लोबल कोऑपरेशन। जब पूरा विश्व एक साथ हाथ से हाथ मिला के आगे बढ़ता है तो रिजल्ट्स सामने आते हैं, और इसका बहुत ही सुंदर एग्जांपल जो है वो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के अंदर हमने भी 1992 में उस द कंट्री ने साइन किया, और हमने ये निर्णय लिया कि हम अपने दैनिक जीवन से, या जो कहिए लाइफस्टाइल से, सर्टेन ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस को फेज आउट करेंगे, और एक लिस्ट बनाया, एक टाइमलाइन बनाई। और मुझे बहुत सेटिस्फैक्शन होता है ये देख करके कि उस टाइमलाइन और उस कमिटमेंट को भारत ने बल्कि समय से पहले पूरा किया। आप जानते हैं हम लोग पहले सीएफसी कई सारे यूज करते थे अपने एयर कंडीशनर्स में, और कई सारे रेफ्रिजरेटर्स में, वो सब फेज आउट हुए। एक सीज फायर ब्रांड का फायर एक्सटिंग्विशर आता था जो कि हेलोन फील्ड होता था, उसको हमने कम्प्लीटली फेज आउट कर दिया। तो वॉट एवर कमिटमेंट वॉज मेड ऑन इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म बाय इंडिया, इट हैज बीन फुलफिल्ड, और हमने करीब सारे कमिटमेंट्स को पूरा कर दिया। अभी सिर्फ जो HCFC को फेस करने की बात है, शायद वो 2040 तक हमारा कमिटमेंट है कि जो अल्टरनेटिव HCFC के रूप में हम लोग लाए हैं और उसको यूज कर रहे हैं, उसको भी 2040 तक हम हटा लेंगे। तो इस तरह से जब विश्व के साथ हाथ से हाथ मिला करके हम चले, तो ये ओजोन लेयर का जो रिकवरी भी हुआ, और साइंटिस्ट मानते हैं कि करीब करीब 40% तक ये रिकवरी आज के डेट में हो गई है, और धीरे धीरे आने वाले समय में 2050-60 कई सारे फिगर्स हैं, वहां तक जाकर के हम इसे पूरा कर लेंगे। तो इट इज एन एक्सेलेंट एग्जांपल ऑफ ग्लोबल कोऑपरेशन। इस वर्ष का जो थीम है दैट इज मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एडवांसिंग क्लाइमेट एक्शंस। चूंकि मैं जैसा कि कह रहा हूं कि ये जब हम ओजोन लेयर के प्रिजर्वेशन की बात करते हैं, तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल उसके साथ सिनोनिम की तरह चलता है कि इसी प्रोटोकॉल के अंतर्गत हम सारे ये काम करते हैं। और अभी जो विश्व पूरा एक समस्या देख रहा है, बहुत ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज का, तो सबका क्यूमुलेटिव इफेक्ट उसके ऊपर होता है, और ये ओजोन लेयर थिनिंग का भी इफेक्ट क्लाइमेट एक्शन के ऊपर है। तो हाउ दिस मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल विल हेल्प अस टू चैलेंज दिस क्लाइमेट एक्शन, और उसी को इस बार का थीम बनाया गया है। चूंकि अभी सब चीज को हम, चाहे वो एयर पोल्यूशन हो और या दूसरे तरह की एक्टिविटीज, राइजिंग ग्लोबल नियर द टेम्परेचर ऑफ आवर अर्थ, तो सबको हम क्लाइमेट एक्शंस और क्लाइमेट चेंज के नजरिए से देख रहे हैं। ऑब्वियसली ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का भी इसमें रोल है, ओजोन लेयर डिप्लीशन का भी इसमें रोल है। तो किस तरह से हम मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की राह पे चलते हुए इस क्लाइमेट चेंज को एड्रेस करने की कोशिश करें, संभवतः यही टॉपिक
इस बार का दिया गया है, और इसलिए इट इज वेरी मच ऑफ टॉपिकल इंटरेस्ट। आई एम वेरी हैप्पी कि इस पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ लर्नेड प्रोफेसर दास इज हियर, or he will be discussing on chemistry of ozone depletion and Montreal protocol. That is the basic chemistry, how it gets depleted and all, है ना, और किस तरह से हम इसको क्लाइमेट एक्शन में ले जा सके। इन सब विषयों पे चर्चा करने के लिए आगे हमारे साथ डॉक्टर दास यहाँ पे मौजूद हैं। हम उनके आभारी हैं कि उन्होंने हमारे रिक्वेस्ट को स्वीकार किया एंड टू कॉल द पेन्स टू बी हियर। और डॉक्टर दास से विशेष परिचय कराने के लिए इनकी उपलब्धियों और इनके एक्सपीरियंसेस को आप सभी को के साथ शेयर करने के लिए मैं इनवाइट करता हूं हमारे कलीग बोर्ड एनालिस्ट श्री अरुण कुमार जी को, प्लीज। धन्यवाद नवीन जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, आदरणीय सदस्य सचिव महोदय, यहाँ उपस्थित सभी पदाधिकारीगण और सहयोगीगण, आज हम लोग के बीच डॉक्टर सुब्रत दास जी मौजूद हैं। इनके द्वारा जो है ओजोन डे पर जो है अपना इसके बारे में विस्तृत चर्चा करने के लिए है। और ये भी वर्तमान में डिपार्टमेंट ऑफ अभी वर्तमान में ये एसोसिएट प्रोफेसर एंड हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री में है एनआईटी पटना में। और ये इसके फाउंडर भी रहे हुए हैं इस डिपार्टमेंट के। इनका वर्क एक्सपीरियंस काफ़ी बड़ा लंबा चौड़ा है। और ये 2022 में या अभी भी जो प्रेजेंट में अभी 2022 से जो है एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में काम कर रहे हैं, हेड ऑफ डिपार्टमेंट के रूप में। 2015 से 2022 तक असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में ग्रेड 1 डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री एनआईटी पटना में रहे। उससे पहले जो है 2014-15 में ग्रेड 2 में, और 2011 साल तक असिस्टेंट प्रोफेसर है इनका। आसाम यूनिवर्सिटी से उन्होंने बैचलर डिग्री किया और मास्टर इन पॉलीमर साइंस जो है उन्होंने तेजपुर यूनिवर्सिटी आसाम से ही किया। इनके द्वारा तेजपुर यूनिवर्सिटी से ही पीएचडी बायो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 2011 में प्राप्त। और ये काफ़ी इनका इंटरेस्ट ऑफ फील्ड जो है रिसर्च ही रहा है, और इसमें इनका काफ़ी एक्सपीरियंस है। और आज के लेटेस्ट टॉपिक पर जो है ग्रीन ट्रांसफॉर्मेशन डिग्रेडेशन ग्रेफाइन मेडिएशन काफी रहा है। इनके द्वारा ये एक्सटर्नल जिस ऑनगोइंग है 4 कंप्लीट हो चुके हैं। इनके द्वारा 5 पीएचडी स्टूडेंट्स का सुपरविजन करना है, जिसमें कि 5 कंप्लीट हो चुके हैं। और इनके द्वारा जो है 5 पेटेंट कराए गए हैं। और इनके द्वारा और इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस इनके चैप्टर्स बुक्स के चैप्टर्स लिखे गए हैं। और 20 कॉन्फ्रेंसेस इंटरनेशनल और नेशनल इन्होंने अभी तक अटेंड किया है।
बहुत सारे जगह पर कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में, त्रिपुरा यूनिवर्सिटी में, अमिटी यूनिवर्सिटी में, ये सारी रिनाउंड यूनिवर्सिटीज हैं जिसका नाम आप जानते हैं। उन्होंने वहां जाकर के लेक्चर्स डिलीवर भी किया है। टीचिंग एक्टिविटी के अंदर ये भी वर्तमान में बीटेक केमिकल इंजीनियरिंग, थ्योरी लैब, प्रैक्टिकल लैब, बायोसेंसिंग, ग्रीन टेक्नोलॉजी इत्यादि पर अंडर ग्रेजुएट को अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं, शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। और अंडर ग्रेजुएट लेवल में और ग्रेजुएट लेवल में हमारे मास्टर और पीएचडी के स्टूडेंट्स को शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। पॉलीमर साइंस, ऑर्थो, ऑर्गेनोमेटेलिक्स, इलेक्ट्रोसाइक्लिक केमिस्ट्री, नैनो मटेरियल्स, इन सब चीज़ों पर। और साथ ही साथ जनरली हम देखते हैं कि जो रिसर्च में होते हैं वो एडमिनिस्ट्रेटिव साइड में कम रहते हैं, लेकिन इनके द्वारा काफ़ी बैलेंस है। और ये डिपार्टमेंट के ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट ऑफिसर्स भी हैं, ऑफिसर हैं, मेंबर हैं ACIF गुवाहाटी यूनिवर्सिटी के। और ये योगा क्लब और स्टूडेंट एक्टिविटी एंड स्पोर्ट्स के भी हैं। तो अब हमको समझ में आया इनके स्लिम हेल्थ का जो है सीजन क्या है। स्पोर्ट्स और योगा क्लब में भी इनका काफी बड़ा योगदान रह रहा है। और टेक्नो कल्चर में वाइस प्रेसिडेंट हैं और इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूट इंटरेक्शन में नोडल ऑफिसर हैं। एक्सपेरिमेंट नैनो मटेरियल एंड बायोकेमिकल लैब सेटअप भी इनके द्वारा किया गया है डिपार्टमेंट में। और अभी वर्तमान में परचेस कमेटी के चेयरमैन एंड मेंबर भी हैं। तो अभी आपने देखा कि ये इनके द्वारा सभी तरह के फील्ड में इनका वर्सेटाइल एक्सपीरियंस है। आज हम लोग इनके इस एक्सपीरियंस का लाभ उठाएं। धन्यवाद। So before I invite Dr. Das for his lecture, I would like to request Chairman sir to present a bouquet. Do us the honor, sir, please. Yes. Now I would like to request Dr. Subrat Das for his presentation on chemistry of ozone depletion and Montreal Protocol. Sir. Yes. Thank you, sir, for your nice introduction. So, first of all, I'd like to thank our chairman, sir, for inviting me, and also the member secretary, and sir, and the other dignitaries who are present here. And most important, those are also joined in the online mode. So already, sir, member sir, secretary sir, and he also talks about lots of things about the ozone layer. I just present those things and as in the PPT form. So you already discussed all those things. So anyway, so at present, if we discuss about the environmental, now we are mainly working on the one parts of the our environmental. That means we are also working in the photochemical reaction. So before going to start of the presentation, so today I'm going to deliver a lecture on the chemistry of ozone depletion and the Montreal Protocol on ozone depleting substances and advancing climate action. So next slide, please. So obviously the audience, I just give my presentation is starting from the very basic level, so that the all audience can understand the details about what is ozone and what is the ozone layers, then why ozone layers is so important, and what is the different kinds of amendments are made, and what is the outcomes of those amendments, and finally how it is related with our climate and climate change. So if you see that
ozone is a gas and it is the naturally obviously present in the atmosphere. So it is mainly present in our stratospheric level. So we are here in the troposphere. So this is the just the layer in the troposphere, outermost of the troposphere and the lower part of the our stratosphere. You see that in the 10% of Earth ozone, it is available in the troposphere, and 90% of Earth ozone it is resides in the our stratospheric level. So next. So most important things. So how it is formed and why do we care about the atmospheric ozone? It's very important. Why it is so important? Obviously, you see that today we celebrate the International Day of our ozone layers. So that means you understand the value of the ozone layers. The whole world is dedicated one day for the our ozone layers. So that means something is there, and we are also here for this on this occasion. So you see that the ozone, how the ozone is formed. So throughout the atmosphere, so ozone is formed from our multi-stage chemical reactions in the that are initiated by the sunlight. So any reactions which is initiated by the lights, so we can say that it is the one kind of photochemical reactions. So these the ozone, you see that in the right side, you see the ozone formation or destruction, which is the naturally happened. So Earth is so beautiful. Everything is managed in their own way. So that here we are the tropospheric, we are here in the ground level very safely. So you see that there are three types of UV lights up there, which is directly comes to the sunlight, and it is the trying to reach into our in the earth. But you see the range in the UVA, it is the 215 to 400 nanometer, and another is the 240 to 315, and another is the 100 to 240. So 240, this is the lowest wavelength maximum. It is very danger for us, and these 100 to 230, the oxygen molecules are the high energy is required for the breakdown is to produce into the oxygen radical, O radical. Then it is this O radical is further reaction with the oxygen molecule to produce O3. Again in this side, again the simultaneously O3 molecules again further break down to O radical and oxygen molecules and to further O radical. So it is the formation to form our oxygen molecule. So ozone to oxygen, oxygen to ozone, this is one of the continuous processes. And for this layer, for this happening, into the earth, into the troposphere, there is always maintain a one ozone. So ozone is always maintained in and this ozone, due to this ozone, the dangerous UV light or the killing UV light not directly reach into our atmosphere, and maintaining the one ozone presence, and this is called our ozone layers. So next slide, then you see that how now the question is come here, these ozone layers. So now we are able to understand the importance of ozone layer. So that means the UV light cannot directly enter into our atmosphere. So now what is the problem? How the ozone is depleted? So how do emissions of the halogen sources gases lead to the stratospheric ozone depletion? And now what emissions from the human activities lead to our ozone depletion? So this is our main concern. So obviously, most of you know that the CFC, this is the ozone depleting substance. So ozone depleting substance is nothing else. This is the containing only carbon, chlorine, and fluorine. And these three molecules is the chlorofluorocarbons or CFCs. There are different compositions are there, and along with these CFCs, the carbon tetrachloride and the methyl chloroform are the halogens, and the methyl bromides, those are mainly used as the pesticides or our fire suppression. They are also important components. But one thing is beauty is that the CFC or these halogenated compound, they are really non-toxic for us. They are highly stability. They are non-flammable. There are various uses. You see that there are various uses that one aerosol, refrigerant, foams, the building construction is freezing, everywhere used. They are very important substance. But there is one bad problem is that they are reacted with the
our ozone molecules. And this is the problem. So, but suddenly, buying of this item is also very difficult. So obviously, the to use or the limitation of uses of those CFCs or the other chlorinated carbons like halogens or the methyl bromides. So it is very important due to they are degrade or they destroy the ozone layers. So next slide. So, what are the reactive halogen gases that destroy the atmospheric agent? So, you see that in the picture form, there is an halogen sources gases in the presence of chemical conversion, that means the photochemical reaction, they are produces the our reactive halogen gases. And although there are some of the in the largest reactive and the most reactive, and among the most reactive, these the chlorine monoxide and the bromine monoxide and chlorine atoms and bromine atoms are so dangerous. You just simple like take an example. If we consider the simple chlorine Cl atom, it has a near about the 100 years lifetime. And before it's deactivate and it most probably comes to our environment as a HCl form, it destroy more than 1 lakh of ozone molecules. This is the only one chlorine atom destroy the 1 lakh of ozone molecules. So how it's dangerous? So and also the 100 years lifetime. So next one I saw that how it will the destroy. This next one. So this is the what is happening. So how the simple chlorine atom, chlorine Cl radical can destroy the 1 lakh of ozone molecules due to the this is the possible by the chain reaction, or you can show that the addition reaction or chain reaction. So obviously this is not only limited to that. In the, you see that there are professor in the Steelwood and Mario and Professor Paul, they have got the Nobel Prize in 1995 for their invention of the chlorine cycle and NO cycle. So the along with the our halogenated compound, the NO nitrous oxide is nitric oxide is also dangerous for the depletion of ozone layer. So you see that the reaction, the chlorofluorocarbons, any of the chlorofluorocarbons, they are in the presence of UV radiation, they are break down into the formation of the Cl radical. And this Cl radical is reacted with the ozone molecule produced from the ClO and the oxygen molecule. And then ClO then further is oxygen radical to ozone radical to from the our Cl dot radical. And this Cl radical again further reaction in the first step of the reaction to form the again reaction with the ozone to produce the oxygen. So as a overall one Cl atom is destroy the 1 lakhs of ozone molecules. That means converted into the our oxygen molecules. So the ozone molecules are converted into the our oxygen molecule. A single one chlorine atom into 1 lakh molecules are destroyed. Same way in case of the NO, our nitrous oxide reacted with the oxygen radical to produce nitric oxide, and nitric oxide even further react with the ozone molecules to produce the oxygen and nitrogen dioxide. So this is the chain reaction, and this is never end. Now we can always know that the polymer, living polymer. No, this is one kind of example. This is chain reaction, polymerization reaction. So next slide. So the obviously the various we are also talking about here. There are various amendments come, and it is very important. And one of the most successful one is the Montreal Protocol, right? Everyone talking about this. So this is one of the most successful one. And what is the main agenda of this one? In the Vienna, they are on near about the 28 nations. They are meeting the first meetings and on for the reduction or the limited using of the ozone depleting substance. So as a result, there is an amendment was signed, and in the 1987, the amendment is regulated, and the our completely banned the CFC, the methyl bromide, or the halogens, these type of gases, or it is not possible to complete it. And otherwise, how does we are here in the present day? You see, this is not possible to our luxury lifestyle is also simultaneously
affected. So the slowly it's affect. Now next comes to the next slide. I'll see that. So has the Montreal Protocol been successful in reducing ozone depletion substances in the atmosphere? We can see that yes, it is. Montreal has decreased the overall abundance of ozone depleting substances in the atmosphere for the first 2 decades, and you see the curve in the presence of the when we applied the Montreal, we follow the Montreal Protocol and see there how the individual gases, the chlorofluorocarbons is decreases, so that these the ozone depleting substances are simultaneous decreases, and we hope that very soon we are comes to the our uh, ultimate solution with the help of the Montreal Protocol. The next slide. So is the now the question is come, Montreal Protocol is the again the connection with the global warming changing. So is the depletion of ozone layer the principal causes of the global changing? So I can say no, it is not 100%. Ozone depletion is only the principal causes of the, or not only the simple, only one reason for the global warming changes. So anyhow, but the global ozone depletion and the global climate changing, they are linked due to the because the ozone depleting substances and their substitute are also the greenhouse gases. So the abundance of these greenhouse gases in the decreasing in the presence of the ozone depleting substance, as a result, our climate change also affected. So our global warming is also affected. So next slide, you see that. So are the Montreal Protocol control the ozone depleting substances for helping the our protect the Earth's climate? So I can say yes. Many ozone depleting substances and are also potent the greenhouse gases that are contribute to climate forcing when they are accumulated into the atmosphere. So these are the all you see that the curves. So how the our Montreal protocols is also affect the ozone depleting substance and is also affect the our the this one our climate changes. Now the question is comes next slide. So then this is the another amendment. So we are banned everything. So it is not a solution. So how to survive the building constructions for the refrigeration, not only the our AC or the fridge or our room, all kinds of freezing, our fire suppression, our the pesticides, all are use these chlorofluorocarbons. So what is the alternates? So they are alternates. They are suggest that use the hydrofluorocarbons. This is the zero ozone depleting potential. So the hydrofluorocarbons is the zero potential. They are not destroy the ozone layers. But again, the problem is that the hydrofluorocarbons is one of the, you see that in the last table in the hydrofluorocarbons is having the global warming potential is 12,690. That means the most of the global warming substances. So something is good for that, which is the zero ozone potential, ozone depletion potential, but the maximum of the global warming potential. So we have used the alternatives. This is against the CFC for the depletion of ozone layers. So this is also not success due to the alternatives. CFC is additionally create a problem for the global warming. But according to the Montreal Protocol is only concentrated on the ozone depleting substance. This one is the very good. This one is 100% success and very good. But the alternatives, they are not considered about the climate change. So the Kigali amendment, they are considered these climate change factors. And as a result, they are told me that the limitations and uses of hydrofluorocarbons. So same as CFC is a very good substance, very wonderful gases, very wonderful substances, but this is only problem with the ozone depletion. The alternate is the hydrofluorocarbons is a very, very zero ozone depleting substance. But the problem is that global warming potential, climate change. So this is the Kigali amendment. They are limitation of the uses of our HFC. Then what next? So
This is our next. Then this comes to our India. So Indian Cooling Action Plan. This is the ICAP. So we had also made one amendment in the 2019 under the launched by the Ministry of Forest and Environment, Forest and Climate Changes. This is very recently we launched, and the objectives of this the assessment of cooling requirement across the sectors. You see that there is in various sectors: space cooling in buildings, air cooling, air condition cooling technology, cold chain refrigerant, transport air conditioning. There are lots of cooling system is required. Due to we find out the alternatives. We are hydrofluorocarbons, we can bind, it is also not a solution. Everything will be our the luxury lifestyle or the normal lifestyle is totally changed. We are cannot survive without in the summer season without the AC. We are not building collapse insulating or the other substance is very mandatory. So the objectives of the Indian Cooling Action Plan is to what is the alternates, and they are only also focused in the development R&D innovation ecosystem for the indigenous development of alternative technologies. So the CFC to HFC, then now we are looking for the alternatives. Then what is the outcomes? Next slide, we see that already there are activities, so many R&D activities are going on. All the IITs, ISCs, or the NITs, or the other central funded institute already receive several amount of funds from the ministry for the ICFE to carry out the research to improve the refrigeration cycle, heat transfer, compression, energy efficient electromotors, controls, and heat exchange. And there are some results, like an example, the refrigeration air conditioning lab at IIT Madras has embarked as the pilot study to evaluate the performance of the multi-ejected carbon dioxide system as an alternative to HCFs or SFC refrigerant. And IIT Bombay is also has developed the several patents on liquid desiccant cooling technologies and the novel mobile air conditioning, which is also can reduce dependence on our environmental technology. So there is this is obviously very recent our amendments. So we are also working on it directly or indirectly to how to take the advantage of the ICPA fund for the to find out the alternate solution or HFC, which is mostly used in the refrigerant substance. So this is the some outcomes is going on. And next slide. So now the question is then. So obviously, how is ozone expected in change in the coming decades? So obviously, we are here for the ozone depleting substances, ozone layers. So what is the expectation we are here in the recent years? So as you see in the curves, you see that in the very beginning in the 1960, around the 1980s or the 2000, there is a huge level of ozone depletion is there, and obviously there is an ozone hole also created, and as a result, there are so many dangerous UV light. The killing UV light directly comes to our environment, and there are so many incidents happened, and as a result, also lots of like skin cancer, like disease also happened. But due to the Montreal protocols action and the other alternative developments or other alternative amendments and the new technologies, we expected in the slowly we are improving, and we are very soon in the by 2080 we are coming to our original position. So the next slide. So now, obviously, I am the chemistry background. So as I feel that what is the rules of chemist, and obviously, believe you know everything. What is the cycles? What is the they are directly or indirectly fully related with our chemistry related problem. So it is other. So my obviously what is my rules? So obviously you see that in the flow chart. So first generation of the fluorine gases, the CFC is the main component for the ozone layer depletion. So we find out the alternates, the HFC and the HCFC, but they are also the problem in the global warming. So now we are recently using the hydrofluoro. Other substance, we are looking for the alternative base. So these works is going on. So alternatively, the total band of the CFC or the halogens and the other brominated or carbon tetrachloride, this is
obviously we're looking for the alternate solution. Otherwise, the hydrocarbon is also going to ban. So, looking on the all the consideration, their short short degradation or the other properties, we are looking on the all the other properties. We should find out the alternate substances which overcome all the changes, ozone depletion, as well as the comfort, our environmental lifestyle, all the application, just like in our freezing, building materials, all those things, and also those gases are not also harmful for the global warming potential. So the alternative technologies we are looking for, and chemist is also plays an important role for this side. So next slide. And so you see that what is the actual, why it is the so important, the stratospheric ozone protection. You see that in the what is the 1987, there is a big ozone hole, blue color is there, and the simultaneously after the whatever the year present year Montreal protocols, there is an slightly this big hole is reduced in 1900. October 26th, this is slightly reduced, and 2021, you see that this blue these ozone depletion reduced, drastically reduced. But the problem is that we are looking for the our all considering all those activities, so that we are also need to find out the alternative substances. So hydrofluorocarbons is not a suitable substance due to they are also global warming problem. So next slide. No, so the putting policy into practice. So what things we need to practice our indigenous, so that we can reduce all the factors, the ozone depletion, and also the global warming factors. So the refrigerant or the air conditioning. So obviously the Montreal Protocol CFC totally banned, and initially the CFC were replaced by HFC, or this is also the again in the Kigali amendment. This is also now the limiting uses due to they are also the global warming problem. So or alternative coolants such as the hydrocarbons or the ammonia, this is also the under process. It's not totally this is also in the pilot level, or it is not directly come into our direct application levels. So the sheet of the new coolants are also allowed to manufacture, and the India, obviously, India ICAP takes the necessary steps on this factor. Then another is the building materials. In 1999, almost all the homes and the insulating buildings, insulated buildings and the refrigerator, you see that they are used the CFC. And CFC is now has been completely replaced by the ozone safe technologies, including the HFC, the hydrocarbons. Then HFC we also need to reduce. Then aerosol and the inhalation, what is the medical astha or the asthma, and the COPD. So they are also the use the CFC. So we need to the alternate of this substance, and the crop production. What is the agriculture field? You see that the methyl bromide, this is the very dangerous insecticide substances. So we should totally ban. Obviously, now the farmers is also not fully follow the this amendment. So we can need to more practice, and we can follow all those safety. So considering the ozone layer depletion, and considering the global warming factors and climate change, and we are all now looking for the alternative solution, the alternatives of the Montreal protocols, but the Montreal protocol is fully success to reducing the ozone deflection. But again, the problem is comes in all those substance alternates creating our environmental global warming problem. So Kigali is also banned the limitation of the hydrofluorocarbons. Now we are looking for the alternate solution, how to find out the alternate substances of the these on hydrofluorocarbons, and as a result, India ICAP is make out in 2019 a very big decision for these find out the alternates, and this is the overall comes. So next slide, just for a time being. So I think say that
there are lots of advantage or disadvantage, the side effects are coming. So we are still looking for the more research work is required to find out the very good alternative solution, considering the ozone layers and considering the global warming factor. So, but for a time being, the research work, the scientists are going on their work. There are lots of research teams are doing their work to find out the alternative solution as per the ICFE 2019 Indian available system. But for a time being, for the safe side, we can follow the these wearing sunglasses to protect the UV light. The using sunscreen, it is very required. You also go to the this is the direct exposure to the UV light is also required for the vitamin D. So, but we use the sunscreen, and also we use the measure the our own way to UV level, whether our own shadow. So this is the sum of the for a time being we can follow the same, and but obviously the future in our hands. We can do everything, we can do anything. So what are the alternatives, find out we can do. We are looking on this, and the scientists are looking on this, and up to this I just thank you all. I think people are able to understand the who's are join online or offline good. So I am happy to further discussion on this. Thank you. Thank you, Dr. Das. Thank you, Dr. Das. Now I would like to invite participants if they have any queries or something to ask. Dr. Das would be happy to answer it. So, अगर आपके कोई प्रश्न हो, yes sir. Sure. Yes. Thank you very much. Chemistry is very important for all of us. Yes. Our body is a biochemistry and everything. So thank you very much. What I understood is the chlorine is the culprit. So we should have the chlorinated hydrocarbon, the plastics, particularly those are used in the medicals, is very, once it is burned, they free chlorine. Yes, sir. Halogens. Not only chlorine, bromine. Polyvinyl chloride is very interesting subject, but we are using it as an underground. Due to it is divided into the chlorine radical form. So we have to avoid, and what we can do as general public, we should not burn plastic. And not at all, we should not allow any plastic to burn openly, because it is forms the dioxins and fluorines. Particularly the biomedical waste plant, that's why the temperature is maintained. Because at low temperature, the dioxin fluorides will come, and those are proven carcinogens. So that's why we have to be very careful that the chlorinated substances are not burned. The other part is that we are substituting is chlorine. Earlier, the chlorine bleaching powder was used for cleaning our drinking. Now the ozone is replacing it, but the ozone handling is also very dangerous. Burns skin, very corrosive, and it can burn. And we should also think wherever the refrigerator people or air conditioner people are coming to our house, we should always insist that it is not odious substance, it's not there. This is, we have to ensure from our, and we should have to publicize to our students, to our suppliers, those what we, because it should not be used. Once it is banned, it will be banned. So this is my simple submission to all of us. The chlorine, dangerous, and the use of the eco-friendly refrigerants for our improvement. Thank you so much. But I just add, in some cases, it is very difficult to totally ban the chlorine-related substance. Mostly, we are chemists. We are used the solvent as a chlorine-related substance. So there are so many things are there. So chlorine as a solvent is used. Otherwise, chemist people doing their experiment, it is also
issue, so that we also find out in that case also to find out the alternative solvents to carry out the reaction in the laboratory. So You are very right. Sodium When chloride we are we using. Huh. Sodium chloride every day we are Uh, consuming, uh, but it should not be available in the Yeah. atmosphere in the form of ion. That is the issue. when we talk of plastics, most of the plastics are chlorinated only. Hmm. सभी नहीं है, most of them are there. Particularly हाँ, medicated, हाँ, medicated or तो वो काफी है, ऐसा नहीं है. तो ठीक है. तो but replacements are there. Phasing out is also there. In our rules, we don't allow not chlorinated plastics. Plastic bags. Bags and all. All these impacts, I think, when UV rays upload the earth surface directly, that will have impact on crop production also. Yes, yes. There sometimes they are totally burned also. Leaves and these and. because So sunburn happens to plants also. yes, BHU has their experimental agricultural site first to see the impact of ozone on the agricultural crops. So, madam, is there another? It is there. It is there. It is, So so it is BHU there. is heavy. Vanachara University Department of Botany, they are having experimental site for to see the So papers are impact there. of ozone. Plants के ऊपर है, animals के ऊपर है, सब के ऊपर है. Particularly, वाटर बॉडी पर होगा. ओजोन सर मेनली क्या होता है ना, SO2 के साथ रिएक्शन होके SO3 हो जाता है. SO3 जब सल्फ्यूरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, एसिड ड्रेन होके आ जाता है, वो भी एक प्रॉब्लम हो जा रहा है. तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली तो हो ही रहा है. So आप और भी कोई क्वेश्चंस हो आपके? America Acid rain हेलो सर. प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगा, उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म खत्म हो जाएंगे, फिर सॉइल फर्टिलिटी का खत्म हो जाएगा. सर कभी जो आपने स्लाइड दिखाया, अभी जो लिटरेचर देखा है, 2000 में ओजोन लेयर जो है वो काफी थिनर हो गया. उसके बेसिक रीजन क्या इंडस्ट्रीज का बंद होना, गाड़ियों का चलना बंद होना, ये है या कुछ और दूसरा? 2000 में बहुत ज्यादा ओजोन नीचे आ गया था, मतलब डिस्ट्रक्शन बहुत ज्यादा हो गया. डिस्ट्रक्शन बहुत ज्यादा हुआ था. उसके बेसिक रीजन 2000 में ही क्यों हुआ? CFC बहुत ज्यादा हुआ, फिर धीरे धीरे उठने लगा ड्यू टू द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के वजह से. तो ओजोन इसलिए कम हो गया था. अचानक कम हुआ 2000 में के पहले भी ठीक था, 2000 के बाद भी कुछ ठीक हुआ. धीरे धीरे ओजोन 1987 में ओजोन हो रहा, उससे पहले धीरे धीरे आके फिर बैन तो किया, इमीडिएटली तो फॉलो नहीं हुआ, फिर उसको धीरे धीरे फिर बढ़ रहा है. वो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की वजह से ही वो ऊपर उठ रहा है. तो वो जो इफेक्ट जो ऑलरेडी हो गया था उसके वजह से तो पूरा डाउन आ ही गया. उसको तो फॉलो करने में सबसे बड़ा लार्जेस्ट होल 2000 में ऑब्जर्व किया गया. हाँ, वही इस तरह का 1990. लेकिन हमारे समय से जो है 2000 में जो ओजोन लेयर डिप्लीट हुआ मैसिव, उसके बेसिक रीजन कोरोना पीरियड में बहुत ज्यादा मात्रा में सोडियम हाइपोक्लोराइड एज ए डिसइंफेक्टेंट, जो कि क्लोरीन है उसमें, और भी दूसरे सब्सटेंस जो है सैनिटाइजर वगैरह जो है क्लोरीनेटेड सब्सटेंस जो है यूज हुए. उस कारण क्या हो सकता है? 2000 में हुआ था ना. अच्छा हाँ, सॉरी 2020 में. अच्छा 2020 में. हाँ क्लोरोफ्लोरोकार्बन का इफेक्ट. हाँ ठीक ठीक 2020. लेकिन सर sodium hypochlorite या something disinfected are ionic compound. Those are not irradiated by UV light. UV light irradiated by only covalent compound like CF3CN, CFC. These are covalent compound. Ionic compound sodium hypochlorite. These are not affected. So that's why I just wanted to cite an example. I also shared the newspaper cutting with you. The last 24 years, IIT Kharagpur, they are doing research, and they have clearly told that the ozone earlier when it was detected, the density was 160 Dobson unit, and in 2024 they have observed it as 140 Dobson unit, and there is no hole. Density is getting reduced. That they have reported in last 20. तो कभी नहीं है, वो तो So this is the observation by IIT Kharagpur study. I mean, why they are confined to the Antarctica region? So this is the.
Most of the ozone hole are confined to the Antarctica. So they are very close to our direct sunlight. Arctic also recently. मैग्नेटिक फील्ड साउथ जो पॉसिटिव मूवमेंट के चलते वो सबसे मैंने सबसे southern hemisphere, not compared with the northern hemisphere, where the most of the temperature is के कारण भी दूसरा टेम्परेचर भी है ग्राउंड लेवल पे जो ओजोन है उसका पोल्यूटेंट देखा जाता है सर, इसका इम्पैक्ट भी है, बहुत सारे एडवर्स इम्पैक्ट्स है। तो इसको मैनेज करने के लिए क्या ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस टाइप का यूज करना ठीक रहेगा? फिर ऊपर में जाके डैमेज फिर ऊपर जाकर वो चला जाएगा, एक जगह एड्रेस करेंगे, दूसरी जगह वो क्रिएट करेंगे। जितना चाहिए बट सर जाएगा यहाँ पर हम लोग को प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा, लाइक इन कैलिफोर्निया, क्योंकि अभी जैसे कल का बात है, कल का बात है सर, ये अच्छा खासा नंबर में जो है सिटीज में ऐसे अब जैसे कि सासाराम में वोटरी है, ये सासाराम में सिर्फ एक दिन 2 दिन नहीं है, साल भर का देखिएगा पूरा सबसे ज्यादा वोटरी का सासाराम में ही है। पता नहीं रीजन क्या है कि वहाँ ज्यादा है, सबसे ज्यादा और उसके बाद पटना में भी है, मुजफ्फरपुर में भी है, गया में भी है। PM 2.5 कम है, PM 10 कम है, प्रिंसिपल पोल्यूटेंट के रूप में उसको ले लेता है। सर एक चीज मेरा डाटा को मैंने स्टडी किया, ओजोन is within the norms most of the season, except in summer, because the solar radiation has a plate, because it bleaches the NOx in the atmosphere. That is the reason we are getting higher concentration of ozone as compared to others. In summer it is particular. And in America, and throughout the year, ozone continues. इसका सोर्स क्या होगा? Is all ग्राउंड लेवल पे सोर्स क्या होगा? I don't say वो सर वही NO2 से रिएक्शन, so that's why SOX भी कर रहे हैं। ज्यादातर that's वही why the vehicle तब तो ये सेकेंडरी पोल्यूटेंट कहा जाएगा। हाँ, ओजोन इज द सेकेंडरी पोल्यूटेंट। सेकेंडरी नहीं है। एक्सेप्ट पॉइंट ओजोन इज द सेकेंडरी, आई एम नॉट मेंशन हियर, ओजोन इज द सेकेंडरी पोल्यूटेंट। हाँ यही है। वो यही है। as a open door. सर अभी आपने पूछा था कि अंटार्कटिका में ही ज्यादा क्यों होता है, आर्टिक में भी क्यों नहीं होता है। सर प्रॉब्लम यह है कि अंटार्कटिका में टेम्परेचर कम रहता है और पीएफसी स्लॉट्स का जो फॉर्मेशन होता है वहाँ ज्यादा फेवरेबल होता है, और इसी के कारण जो वहाँ टेम्परेचर कम रहता है और पीएफसी स्लॉट्स का फॉर्मेशन होता है, वही फर्दर आपको ओजोन डिप्लेशन में मदद करता है। तो बेसिक रीजन ये है सर। यही कारण Yeah, it will the pressure, temperature Yes. must be regulating formation and restricting ozone in giving agent. Why we are on the earth? Because again the temperature, pressure, gravity, everything. So yes. Sir actually asked the question why 2000 is we identify the ozone. No, ozone 2000 ground level ozone was on the higher side, not in the stratospheric. No, sir just asked that क्यों हम लोगों ने आज ओजोन होल Because 2000 में highest atmospheric ground level was recorded. Because there was no smoke in the sky, there was no dust in the sky, and the solar light was able to penetrate and react on the NOx. The vehicle was there. So those had contributed formation of ozone at the ground. There are many research papers on it, and 2020, the highest ozone was reported even in India during those periods because of the solar radiation. So that's why. that is PM 2.5 and 10 is not there. Yes. So The predominant pollutant. So if participants
you have finished with your queries. So I would like to. Sir, Yes. sir, I have a question, sir. Sure. Well, सर थैंक यू फॉर फर्स्ट ऑफ ऑल योर इंफॉर्मेटिव लेक्चर सर माय क्वेश्चन इज कि जब सीएफसी को रिप्लेस करने के लिए एचएफसी लाए हम उसका जीडब्ल्यूपी ज्यादा था तो फिर आपने अपनी स्लाइड में मेंशन किया कि उसके अल्टरनेटिव के रूप में हम लोग हाइड्रोफ्लोरोओलेफिन्स यूज कर सकते हैं सर इसके बारे में थोड़ा बताएंगे कैसे कर सकते हैं और क्या है ये सब्सटेंस और इस पे आपने मतलब थोड़ा इस पे क्वेश्चन मार्क भी डाला हुआ था कि ये डाउटफुल है तो मतलब ऐसे अभी नहीं एक्चुअली क्या हुआ जब हम लोग पहले मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में हम लोग से कंसंट्रेट किया था कि ओजोन डिप्लेशन सब्सटेंसेस को कैसे रिड्यूस किया जाए और ओजोन लेयर को हम लोग कैसे मतलब डिस्ट्रक्शन से हम लोग कैसे करते हैं इसीलिए हम लोग सीएफसी को इसे बैन करने के लिए उसका ऑल्टरनेटिव लेके आया था हम लोग एचएफसी तो हम लोग को मालूम नहीं था कि क्योंकि उसका ओजोन डिप्लेशन पोटेंशियल 0 है तो ये बहुत ही अच्छा है लेकिन हम लोग को ये मालूम नहीं था वो साइड मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल वो डिस्कस नहीं किया था उसका जो ग्लोबल वार्मिंग फैक्टर ज्यादा हो सकता है तो इसीलिए तो रिसर्च तो वही होता है एक के बाद चलता रहता है तो जब पता चला बाद में पता चला कि एचएफसी इज ऑल्सो वेरी डेंजर है क्योंकि वो ओजोन ग्लोबल वार्मिंग को आगे जा रहा है तो इसीलिए ऑल्टरनेटिव सोच रहा है हम लोग क्योंकि इन केस ऑफ एचएफसी वो अगर हम लोग का तुम यार मतलब उसका लाइफ टाइम देखोगे तो 200 लगभग 220 ईयर्स है तो वो डेंजरस हो रहा है इसलिए ग्लोबल वार्मिंग फैक्टर बहुत ज्यादा आगे जा रहा है तो इसीलिए हम लोग सोच रहे हैं कि फ्रॉम लाइफ टाइम इम्पैक्ट मतलब डिग्रेडेबल मतलब सब्सटेंस जो हम लोग सोच रहे हो कि उसका हाइड्रोक्लोरोलिपिन्स हम लोग एक ऑल्टरनेटिव सोच रहे हो उसका वेरी फ्यू डेज है तो ये ज्यादा डेंजरस नहीं होगा तो इसीलिए हम लोग उसका ऊपर अभी काम चल रहा है ऑल्टरनेटिव से उसका भी रिजल्ट अभी तक तो पूरा एक्सपेरिमेंटली मुझे जैसे अभी तक मतलब पब्लिक में अभी तक आया नहीं उसका एक्सपेरिमेंट अभी बहुत चल रहा है उसका ड्यू टू कंसंट्रेट ऑन द दिस वन लेस लाइफ टाइम स्टे ओके सर and thank you to so add much to it, what Dr. Das has very rightly said कि उस समय प्रायोरिटी था कि ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस को फेस करना सो SCFCs दे केम एज अ रेस्क्यू एंड अगर आप देखेंगे कमिटमेंट का हमारा वी नो दैट कि ये भी जो है वो हार्मफुल है as it is contributing to global warming and climate change so the country has already committed that by 2040 we will be phasing out this SCFC also तो अभी उसके ऊपर काम चल रही है और वी बिलीव कि अगर कोई बढ़िया सॉल्यूशन मिलेगा तो 2040 क्या उसके कहीं पहले जैसा कि मैंने हम लोगों ने दूसरे कमिटमेंट्स के साथ किया है इसको भी उसके अर्ली फेज आउट कर सकते हैं सो इट इज देयर और वो अटेंशन में है गवर्नमेंट के उसको करना है सर इसमें जैसे कहा कि इंडिया का जो कंट्रीब्यूशन है 2% है ओबीएस 35% है डेवलप्ड कंट्रीज तो अगर इंडिया अगर कंप्लीटली कर भी लेता है ओडीएस रिस्पांसिबल एडिकेट कर भी लेता है तो भी हमारा 35% वाले क्या कहते हैं उसके बारे में भी जानकारी उसके बारे में क्या जानकारी देंगे they are also acting very fast but they are also कितना कम किया वो फिगर कहीं नहीं मिलेगा अगर आप मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के ओजोन सेल में जाइएगा मिनिस्ट्री में Yes, we have not impact. We are thinking let's clean our home first, then we'll go look after the home of others. और ये बहुत लंबा बहस है सो अब मैं अनुरोध करना चाहूंगा आदरणीय अध्यक्ष महोदय से कि वो अपने इनसाइट्स और वे फॉरवर्ड से हमें लाभान्वित करें सर प्लीज थैंक यू डॉक्टर दास In fact, the Montreal Protocol and Kigali Agreement, this is the most important international agreement in the area of climate change. They are successful. And the success lies with the technological improvement. We are able to find out some gases which can substitute the chlorofluorocarbons. So in other areas, like in plastic, we are worried about the substitute and we want to curb the use of the plastic. It is only possible when we find out the substitute
which is economically viable and technically feasible. So the bottom line is, if we want to curb and improve the climate, we have to find the better substitute. Like in coal, we can find the solar energy is a good substitute, but again there are many problems. So it is if we want to arrest the climate change or the climate issue, it is better to put more and more investment in research and development. Because here nowadays, in all over the world, we are focusing on the arguments. Arguments don't solve the problems. We need a complete research to solve it. The next lecture in this series is from our own Bihar State Pollution Control Board, Dr. Lachna. Oh, very nice. On 24th October 2024 at 3 p.m. And she'll be talking about the wetland ecology, economics, and ecosystem. And I hope that especially about the ecosystem services of Visheshwarasthan and nutrient cycling of the water body. In fact, it is very important because as we know that there are two important things of ecosystem functioning. One is the energy flow, and the second is nutrient cycling. And energy flow is we are talking about on the climate, the directive forcing, because the climate people are talking, telling us as directive forcing. And in ecology, long back, we know that is improper. Achieving energy flow, here, the neutral cycling also, the second aspect is also important because these two functions, they run the whole ecosystem. And the climate change and all the problems are because these systems are not functioning properly or they are disturbing at one place or another. So that talk will be very helpful for everybody who is interested in climate change. Thank you. We will be looking forward. Thank you, sir. And I would In-house. like to request Chairman sir and Member Secretary sir very humbly to present a memento to Dr. Das.